Yeah, I think I am live right now. Let me just open my window. Fine. So I'm going to today solve these questions which were given to me in my class. Okay, so in insert into string. I've already done this question today, so I will be just revising the logic. Yeah, fine. Insert into string. You are given two strings as an R and a number n. Insert R and S at every index portion which is divisible by n. We have to insert this R string at every position of S where I modulus n is equal to 0, right? So we initialized string builder SP because we need to add our string should be dynamic because we have to insert our string into this string, right? So I made a for loop, and if the index is valid, it is divisible by n. Then we have to append that string into our string builder and also the character which is at its that position, right? Else we have to append the character which is not divisible, characters whose index is not divisible by that n, right? Then simply I will print that thing, right? This is an easy question. Let's kind of see the next question. I think this one. Yeah, remove with patience. Oh, this is a medium level problem of a string. So there are like multiple things we have to keep in mind while solving this question. Given two strings S and R, I don't know my voice is coming right or not because I'm sick so low. Let me know if my voice is not high enough. Given two strings S and R, replace all instances R from S with a new string formed with the concurrent characters choose before R by as many times as the length of R. And we have to like the like ch- this is a S string and this is a R string. We have to put our R string S string and like we got TP here. Let me show you. We have H K K P O, right? This is a S string and we have R string as PP. We have to update our original string such that if we get an R string inside S, we have to replace that string with the previous character before that string. Like PP से पहले K है, so we have to replace PP with K and O. Okay, so we are going to build. We have like I have already built this logic. I will be revising it and showing you how it's working. Right? If our string is HPP PPO, right? What will be the answer? It will be 2 times K and then again 2 times K O, right? So eh, there can be more than one repetition of R string inside a S string. So what I have done here, I have initialized our string builder because we don't know how long our string will be, the length of the string. So it will be easy for us to work on string builder, right? So what I've done here, I've appended the character in, in initially our string builder is empty, so I've appended my as dot character h here. If h dot contains, because this contain function only works on strings, so I need to convert my string builder to string, right? So then I have compared s, sorry, not s. I will get h here. I will compare my h as h contains r contains checks a sequence of characters, right? He will
it will check कि इस वाली चीज में PP sequence वाइज एक string exist कर रही है नहीं कर रही है. You can also use and string, but ये at the end हम लोग concatenate जो करेंगे वो last में concatenate करेंगे. It can end string will also work here, right? So we're going to compare our string with the contents of R, and we're going to store the index of the R, like where we will get our R. Here we will get our R at second position, right? And we have to replace at second position with the previous character, right? So we will set index. We will select setting this character at position 2 and 3, right? So we have used sp.s set char at index plus j plus sp.char at index minus 1, right? Else, if there will be case where we will be getting our string in from initial only, right? Like our S string is like that. Okay. And like this, right? And what do we have to do? We have to delete this part of the string. Are you understanding what I'm trying to say? There is nothing that exists before P. So we will delete this part of the string, PP, and we will be continuing with KKO. Okay, this is the logic behind this question, and then after all this repetition, we're going to print our SP. Okay. Now let us move to the next question, which I have not done yet. Okay, passport matching. Okay, we have already done this question. Like, I need to do some questions which I have not done yet. What is this? Best time. Second is the best to buy the stock, and fifth is the best day to sell the stock. Okay, I've also already done this question later also. So let me see. You are given an array of these prices of size n. The prices I is the price for a given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day, buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. Find maximum profit you can achieve from this transaction. Okay, we are going to try this. This is an easy problem. Okay, let's just see. 7. If we buy at 7 and sell at, okay, it will be a loss. But if we buy at 1 and sell at 6, there will be a max profit of 5. Right? This is what's the explanation here. We bought our item at second day and sold it at the fifth day. That is 6. So we got a profit of 5. Maximum profit we can get. So okay, I'm gonna try this question. Code high. So okay, I think I need to take an input of an average.
First step influences. That is AR and okay, now I need to compare the max, find the max profit, right? Okay, let's see how much I remember. I've also done this question before also. And I equal to 0, then n, I plus plus. What do we have to do now? I should start my loop from first position. Like, as far as I remember, we have to start our question on the first position for these type of questions. ARR of 0, I equal to 1, right? Go to the two. This will be by our ARR of I. We have to find a profit also. So our net profit will be dot max will be. We should write net P only. Net of max net profit, comma. Mm, yeah. 715663. Should have revised the previous questions, I guess. 267 and 1. We'll buy it at 1 and our max profit will still be 0. Okay, then again I will buy at 1 and our max profit will be. Mm, what will be my max profit right now? Because air of I minus 5, if I'm right. I don't know. Let's try on this. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fine. We have to. I this thing I bought it at 7, 5, 4, 6, 3. 7, 1, 5, 4, 6, 3. Okay. I will buy it at 1. And the next profit will be
Okay, I will store max profit as 0 only because currently a profit is 0. Max profit is 0 still. Now, I will still buy it 1 and my max profit will be 4. Now, I will still buy it 1 and my max profit will be 1 minus 4, 3 or 4, 4 only. I think this logic will gonna work. I will try to print a profit now. Question around print and not pay. Let's see if it will work or not. 5. Is 5 the correct answer? Yes. They will be, oh my god, 5. Like, plan copy really works. Okay, let's just move to the next question. I have already done this question on another platform. Rearrange array. Okay. It's just basically the smallest, second largest. Oh, sorry, smallest, largest, second smallest, second largest. Best time, even some prices. Okay, we have also done this. Simple array question. I think easy level. Like, let's jump to middle level questions. Prime multiply. Okay. I kind of don't remember the logic. Move all zeros. Okay, I have done this question using two pointer. And just try this question using two pointer. Let me just first try to decode it on my notebook. We have 5, 0, 1, 0, 3, 1, 2. One pointer will be at I, one pointer will be at J at the first position. An integer array of size n. Construct a new array using the elements of AR such that all zero values are moved to the end of the array. Okay. 0, 1, 0, 3, 1, 2. What I have to do? I will compare the first element and will swap that element with the next element if it's not 0, right? If I equal 0 and I plus so on is not equal to 0, j is not equal to 0. J is equal to 1 and I will swap it 1, 0, 0, 3, 1, 2. I will be here and j will be also here. J is 0, j is 0, j is 3. I will move that, swap that 3 here. Okay, I can try this logic. Okay, can I accept equal to new square system document? What is okay? Now I need to take the input of the array int array of I is equal to st plot next int, right? So it took the input part. What else the input?
What I have to do? I'll be clicking equal. Um, okay. What if I start the loop from the first position? Let me just see 0, 1, 0, 1, 0, 3, 1, 2. Okay, 0 is at zeroth position, 1 at 1 position. I, J. If I equal 0, AR of I equal 0, and then AR of J is not equal to 0, right? And what we have to do? We have to swap these values and do I plus plus, I guess. Let us see. We will put ARG 10. And in place of ARG, I will put, okay, I will put ARR of I at 10. ARR of I at 10. And in place of I will put ARRJ. In place of ARRJ, I will put temp. I think this will swap the values. We have to do this. When this condition happens, I have to do I plus plus. An easy problem. I should do it without any help. Any help. Okay, I think I should use some other variable here because I've already taken key in the poly. Okay, let's try this. Run 0 1 0 3 1 2. Okay, our I equal 0, but J is not equal to 0. Okay, we will move to the next position. Our I equal to 0 and J is 1. So we will swap these values 1 0 0 3 1 2. Okay, our J will move and our I will also move. Okay, J is not again 0 or not equal to 0. J will again move. Again, this will happen. We have to swap the values 1, 2, and my J will move here and I will move here. Again, J is not equal to 0. Well, I think this logic will work. Oops, measure. No. 1 3 8 12 0 0. Okay, it should not be Alan. It should be space here. We will see it will work or not. Okay, it's not working for some cases. We can't even see the cases in on the website. Okay.
I choose, choose. Okay, I got the edge case. If my logic question input is 1, 2, 0, 2, 4. So it's not working for this case. Let me just say, J. I think I should do K plus plus at every step. I guess. Just try it. Oh wow. Oh wow. Upset though he accepted, huh? I have to do this question without any help. Let's see. 0, 0, 3, 4. Okay. Okay, I think I should put my J pointer at the end. Okay. What if I try to put the pointers on the opposite ends? I equal 0 and J is not equal to 0. No, this will not work. Mhm. Zero, 1, 0, 3, 4. 0, 1, 0, 3, 4. I have to swap until 0 with 1, only 1, 0, 0, 3, 4. Let me just see what I can do.
Yay. It will be I and J. Swap I with J. Then I think I should write this condition only. If AR of K equal to 0, I will be swapping that thing with the next variable. As F is not equal to 0, okay, it should be ARR of F is not equal to 0. We will be doing plus plus. Okay, 0, 1, 0, 3, 12. As RF will become not equal to 0, we will swap it to, and we will do S plus plus also. Okay, I think I have done this thing earlier. I think the logic is correct. I just added a wrong condition. Wow, wow. Literally, why I added that condition? It basically slow and fast pointer approach. Okay, prime multiplied series. I guess we should move to best time, rearrange array, jumping numbers. Okay, one. Okay, two questions are left wrong. This is jumping numbers and prime multiplied series. First, number x and all jumping numbers smaller than equal to x. 0 to 9, all will be jumping numbers. 1, 1, also 1. 4, 5, 6. Okay, 4, 5, 6 will also be a jumping number, right? Because all the adjacent digits has a difference of exactly 1. Okay, 0 to 9 will be I is less than equal to x. A single line of input containing the value of x. Okay.
what I have to do. I have to set the okay, I have to put in I less than equal to 1. I have to simply print this. So we are going to make a function for it. It will be static because we are not using any object. Call it static boolean if difference. We will taking number as a parameter. And what we have to do? We have to check the difference of the digit. What if I convert this number into an array? Can I do that? Let's try. We have to check the difference. It can also be a three-digit number. So it's not specifically for a two-digit. Okay, let's just run the case for two-digit. And mm-hmm, 9 slash 1 is, you know, you have to return to, have to return here. Else, first of all, I'm making it for the two-digit only. Then I will move to n number of digits. Let's just see. System dot out print. Oh wow, it should be system. It should work for 15. You go to 10 point. Why? Wait, is there a time limit? It's an easy question. Yeah, okay, fine. Forgot to do I plus plus. The loop went infinite. That's why. Okay, 34 in 4 5. I should give space. Will not work for all the cases because obviously I have just created the logic for the two-digit number only. We will check how many test cases will pass. Only one. Wow. Okay. Now will we make logic for the any number of digits. Hmm. I have a question. Can I convert one number into an array? Like मैंने ये लॉजिक कहीं तो पढ़ा है, सो मुझे वही अप्लाई करना है। आप एक नंबर को एक array में कैसे कन्वर्ट करें?
Okay. I when I entered I number one inshallah. Okay, this is not the case. Okay, char digits number to char array. How specifically convert a number into an array? 5, 6, 7, 8, 9. First, I have to convert into string, then to char array. Okay, the character array. Fine. That's it. Okay, now. Another thing, so I have to do it this way. Then you can see some other approach to do this. Char digits also. String dot value of num. String dot value of num. And I have to convert it to char array. Right. Okay, we got a character array. I have a loop through the array. Okay, I will not work, I guess. I think I should use J. J plus plus. What do I have to do? I have to check the difference. If char of dig of I minus 0 minus, it will be a digit, right? If we do any character minus 0, it will be it becomes an integer. Okay, so set array C, set array B is 1 and should be minus 1. It's not equal to 1. And I have to return false. Else I have to return true. And then I should also do mat.absolute. Here, and it should be again a bracket. I think this should work. Okay, I should remove this. Cannot find symbol I. Oh wow, it's J. Yeah, you could have modulo 10 for simplicity. Modulus 10, but I don't know. There will be like how many digits. But what?
Okay, I will see. Okay, I can also do with modulus 10. Yeah, it feels like I have already done this question before also, and I have not done this before. Maybe I have used modulo, use while num greater than 0. Divide num by 10. Mhm. Okay, I will just try this using modulo. लाइक इसमें कमेंट का भी ऑप्शन नहीं है तो मुझे इसे कहीं और सेव करना पड़ेगा. Where should I save it? वाह, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते साइट पे. ओके, ये लॉजिक तो काइंड ऑफ हाई है. इन्फो के लिए मैं ये मॉडलो वाला लॉजिक लगा के देख. स्टोर में लास्ट and divide num by 10 for next. That's weird. Because I have to check the difference of each adjacent digit. I can just try it on a notebook. Num says equivalent. Yeah, but I have to find a difference. Like this is for to like count the number of digits and other stuff. What should the condition be? Like here. Then take the difference. ये कौन सा वेबसाइट है? ये मेरे क्लास के पोर्शन से क्लास में दिए गए. तो कहीं अवेलेबल नहीं होंगे आई गेस. और कहीं बट डिफरेंस. Okay, this what you're trying to say. Okay, fine. ओके ओके, समझ में आ गया क्या कह रहे हो. बट इसका डिफरेंस निकाल लूंगी. कितनी करना है?
उसके बाद will it work? तो मैंने सोचा लॉजिक में तो ये नहीं होगा क्योंकि 12th तक आया है। वेट, oh it's not equal to 1, return false। 5 8 4, 4 आ गया, 8 आ गया। 8 minus 4 is not 6 and 4 का 1 है। फिर 5 and 4 का let me see, it will give wrong answer। 5/10 will be if अगर सिंगल डिजिट रह जाएगी, हाँ वही तो, सिंगल डिजिट रह जाएगी तो वो 0 रिटर्न कर देगा, तो ये चीज़ 0 रिटर्न कर देगी ना। वो बट आई जब जा रहा है वो 10 से बड़ा ही है, एल्स कंडीशन में चल रहा है ना ये, तो नंबर 10 से बड़ा ही जा रहा है। जब ये चॉप हो रहा है तो वो सिंगल डिजिट में जाके गड़बड़ कर रहा है शायद। एक सेकेंड, 5 और 4 का मन आ जाएगा। ओके विल ट्राई, जब तक वो 10 से बड़ा हो। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। while में num written equal to पर सीक्वेंस में चल गया, फाइन। ओके, एक क्वेश्चन रह गया है बस मेरा, ये वाला तो मैंने हो गया था, तो ये वाला रह गया है। अच्छा जब वो सिंगल डिजिट हो जाएगा तो किसी से कंपेयर करना ही नहीं है ये, क्योंकि ठीक है। ये कैसे इसलिए, चलो हाँ। ओके, तो लाइक 9 होगा, 0। So time multiplied series. The series begins with the first two prime numbers followed by their product 6. 6 become consecutive numbers 5 and 7 is then printed followed by their product 35 and so on. 7 है तो 2 3 उसका प्रोडक्ट, 5 7 एंड उसका प्रोडक्ट 35 11 तब तक करना जब तक n के बराबर।
Mm, have to bring the prime. I minus, sorry, now minus I equal to 0. And it will return false. अगर उसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर हुआ तो फॉल्स कर देना है, ठीक है? निकल आउट। तो आई प्राइम है, आई प्राइम है, यहाँ पे ब्लेंडेड, यहाँ पे टू आई प्लस प्लस 3 स्टेप्स में होना चाहिए। यहाँ पे स्टोर द प्रोडक्ट ऑल्सो तो वो आ जाएगा सिर्फ आई विल डू आई प्लस प्लस तो आप तो लाइक 7 एलिमेंट्स देने हैं, जब तक 7 एलिमेंट्स नहीं हो जाए तब तक करना है। आई थिंक तब तक मुझे आई को दिखाना है, जब तक मेरा प्राइम ना आ जाए। प्राइम आई प्लस 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 और जैसे प्राइम मिल जाए तो मुझे पहला प्राइम प्रिंट करना है। ओके, आई हैव टू प्रिंट दैट प्राइम। ओके, मीन फर्स्ट which will be I have to print that time I and again I will check my work like I don't know whether or not to मिल गया तो आगे बढ़ जाए। फिर तो आगे चेक कर लेना तो प्राइम में है कि सेकंड नंबर मिल जाएगा तुम्हारा प्राइम है। I also have to print it. System dot out print I print plus पुट I plus this करना है जब सेकंड मिल जाए मैं तो प्रिंट सेकंड।
Then I have to print the product of first and second. So take n minus minus at each step. As I got my first prime, I printed it to prime minus minus. And as I printed here, minus minus. Between check for and first lesson period. Now to break. Okay, I have to write this condition after every after like printing every element. मुझे लग रहा है मेरा तो कॉम्प्लेक्स बन रही है क्वेश्चन आई डोंट नो पहला प्राइम हो जाएगा साइज कम करेंगे साइज लेस देन 0 पे तो वहीं पे ब्रेक कर दो अगले एलिमेंट डालेंगे मतलब वो प्राइम है और अगर वो लेस हो गया ब्रेक कर दो तो फिर डालने के बाद एन माइनस माइनस करना है ना यहाँ पे नहीं करना सेशन डॉट ऑफ प्रिंट एलन फर्स्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड have to give space also I also have to do in minus minus will it work 7 एलिमेंट है 1 2 3 इनवैलिड अच्छा आई फॉरगॉट टू बूलियन आ रहा था यहाँ पे और इसमें क्या गड़बड़ है this is not on println first into second plus space तो एक ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया एक यहाँ बंद हो गया अच्छा 2 ब्रैकेट है यहाँ पर कैन नॉट फाइंड सिंगल n oh it should be now ओके ln नहीं लगाना है कुछ गलत हुआ है 2 3 6 wait I have to put a 6 कुछ तो मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया है 6 3 5 15 5 7 what should be the output 2 3 प्रिंट करा है देन 6 करा है तो अगला प्राइम देखिए यहाँ पे 2 प्राइम है तो फर्स्ट में 2 प्रिंट हो गया होगा देन n घट गया होगा अच्छा आई प्लस प्लस भी तो करना है हर बार कुछ मैंने किया तो है बाद में किया है अगर प्राइम नहीं है सेकंड प्रिंट करा ये करा सेकंड है then also have to do I plus plus
क्या ये काम कर रहा है? 13 क्यों आ रहा है पर? वेट, 2 3 6 5 7 35, 3 6 7 8 एलिमेंट आ रहे हैं, पर आने तो 7 चाहिए। वेट, 8 एलिमेंट क्यों आ रहे हैं? पहला नंबर मिला, उसे प्रिंट कर दिया, एन कम, एन माइनस माइनस कर दिया और चेक कर लिया। फिर अगला एलिमेंट करके उसे प्राइम चेक करते रहे। फिर जब सेकेंड आया, ये कर दिया। लाइक इस वाले लूप की कंडीशन तो यहीं पे चेक हो जाएगी ना, ऊपर जाके। एक एलिमेंट ज्यादा क्यों आ रहा है? कुछ तो मैं गलत कर रही हूँ। चलो, अगेन 7 एलिमेंट आने चाहिए ना, बट यहाँ पे 8 आ रहे हैं। 3 6 7 8, 11 तक आना चाहिए। 13 भी आ रहा है मेरा आगे जाके। एक स्टेप एक्स्ट्रा चल रही हूँ। 13 नहीं आना चाहिए, 11 पे रुक जाना चाहिए। मैंने कहीं भी कंडीशन लगाई नहीं है। एक मिनट रुको, होगा 7 है, 6 5 4 3 2 1। ओके, अभी भी ये 1 ही है। एक मिनट, 7 7, एक इससे 7 है, इसका 6 हो जाएगा। 7 6 5 4 3 2। Okay, it should be something. लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन किया तो मैंने काउंट से किया था, पर इस बार मैंने एन से ही करा है सब। बट चलना तो चाहिए। एक बार माइनस हुआ। हम्म, ये तो एकदम, अगर मैंने यहाँ 1 करा, आंसर ठीक आ जाएगा, तो लॉजिक नहीं है। ओके, नहीं आ रहा है ठीक। फिर से 2 कंडीशन चल रही है। 5++। मैंने ये चेक किया, ब्रेक कर दिया, तो अगला एलिमेंट डाला है, फिर चेक किया है, फिर अगला एलिमेंट डाला है, चेक योर ब्रेकिंग कंडीशन। बस 0 से कम हो गया। मेक इन इट ब्रेसेस ओनली। बट ये तो सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो चल जाएगा ये वैसे। कौन सा वाला? मेक इन ब्रेसेस ओनली मतलब?
कर्ली ब्रेस में लिखो ये चीज ऐसे। क्या ये कह रही हो ब्रेक को? बात तो एक ही है पर आई डोंट नो, मेरा को कभी कराया जाता है। बट ये काम नहीं करेगा, वो सिंगल स्टेटमेंट विदाउट विशेष चल जाता है। नहीं, 13 आ रहा है, क्यों आ रहा है? मतलब कुछ तो मैंने छोटी सी गलती करी है। ये पहले लूप में 6 तक आ गया होगा, पहले लूप में 35 तक। फिर जब 11 आया है, 11 आया है, तो 13 आया है, डालने के बाद ही तो चेक करूँ। 10 माइनस स्टार्टिंग में लिखो। लास्ट वाला ये। ओके, पहला एलिमेंट डालने के बाद चेक कर रही हूँ बटर कि हुआ नहीं हुआ है। इससे एक पोजीशन घट जा रही है, फिर इसके बाद एक पोजीशन घट रही है, फिर ये हो रहा है, फिर ये आ रहा है। ओके, ठीक है। वाओ, सब फंक्शन के। 3 6 7 सब फंक्शन के। ओके, चल गया ये। अच्छा, मुझे पहले माइनस माइनस कर देना था। इसकी इक्वेशन घटी थी, फिर मैंने एन माइनस माइनस किया है अगला एलिमेंट आने से पहले। तो एन माइनस माइनस क्या है? ये वाला एलिमेंट आने से पहले 3 बार एन माइनस माइनस करा, क्योंकि 3 बार एलिमेंट डाले हैं। डालने से पहले ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन रह गया? ठीक, वाले की वो पाया। एन इक्वल टू 0 के लिए भी प्रिंट हो रहा है। कहाँ गया? 3 6 7। I don't know how it's working, but it's working, to be honest. एन लेस इक्वल टू 0 के लिए भी ब्रेक करना था तुमको। है, एक सेकंड। एन इक्वल टू 0 के लिए भी प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ 7 का 6 हो गया होगा। अभी यहाँ पे 7 ही है। तो एन माइनस माइनस हुआ है, बट ये 7 ही है, ठीक है। तो 7 करीबन प्रिंट हो गया। अब ये 6 हुआ है, अगली वाली के लिए -5 हुआ है। तो उस पिक से शायद से इश्यू होता है। और ना 0 टू 2 करना है पर। ओ हाँ, ठीक कह रहे हो, 0 प्रेस करना चाहिए था।
क्योंकि मैं 0 पे काउंट कर रही थी। हाँ, ठीक कह रहे हो। 0 पे ही 7 तक स्टार्ट है ना। तभी गलत हो जाता। हम्म, एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एन माइनस माइनस था। 0 पे ही ब्रेक करना था मुझे। हाँ, ठीक है। अब ना 8 एलिमेंट चेक कर रही थी ना मैं। हम्म, ठीक है। सीधा ये भी कर सकती थी ना, जैसे 0 होता है वैसे ब्रेक हो जाए। ये भी चल जाएगा। हाँ, ये भी चल जाएगा। इससे जैसे 7 एलिमेंट्स पूरे हो जाएं, वी हैव टू ब्रेक। ठीक है। तो मेरा होमवर्क तो हो गया है। अब मैं अपना लेट कोड कर सकती हूँ। मुझे लीड कोड की कौन सी प्रॉब्लम्स करनी थी? नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। तो पहले मैं पुरानी वाली जगह पर ली क्या? काइंड ऑफ ग्रेडी अप्रोच बोल रही हूँ मैं। अब आपको प्लीज लैमिनेट चेंज। अभी तक मुझे ग्रेडी का फ्लो समझ नहीं आया कि ग्रेडी में कर क्या रहे हैं। 455 तो चेक कर लेती हूँ मैं क्या किया था मैंने इसमें। 45 करने थे 860। ये तो मुझे याद है 1710। मैंने बहुत बार ड्राई रन किया था इसको। लैमिनेट चेन 860 चेक कर लेती हूँ। ये- क्यों? लाइक इनमें कुछ ग्रेडी अप्रोच का समझ नहीं आ रहा। ये भी नॉर्मल लॉजिक था। इसमें ग्रेडी क्या है? खुद ही पूरा लॉजिक बनाया है। नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल। इसको ट्राई करते हैं। Given array of intervals, the intervals because the starting the maximum intervals will be more to make the rest of the intervals non-overlapping. Intervals which only touch at a point are non-overlapping. ठीक है।
1 और 2 पे चला और 2 और 3 पे हो गया। Then 3 and 4 पे 1, 3 can be removed and the rest of the intervals are non-overlapping. ओके, ये और ये चेक करना है क्या? 1, 2, 1, 2, तो 1, 2 ओवरलैपिंग में से मूव कर दिया, फिर ये भी ओवरलैपिंग में को भी रिमूव कर दिया। ग्रीडी है, मतलब मैं ग्रीडी की कर रही हूँ ना, मैं अभी सिर्फ ग्रीडी की कर रही हूँ। ग्रीडी का ही टेम्पल वो मांगा है मैंने लाइन से क्वेश्चंस। समझ में नहीं आ रहा, ग्रीडी अप्रोच से स्लाइडिंग विंडो कटाने की एक तरह की अप्रोच थी जो लग जा रही थी, तो ग्रीडी का भी तो कोई अप्रोच ही समझ नहीं आया। हम्म, 1, 4 तो ठीक है, इसमें तो 0 है। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट चेक करना है क्या? एक तो 2D आ रहा है ये भी। 2D आ रहा का मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन किया था। ये ना मतलब प्लान नंबर ऑफ रोज कितने हैं? इंटरवल्स और फॉर्म हैं। अगर इसकी लेंथ निकालेंगे तो रोज निकल जाएंगे। तकनीक में कॉपी पे अप्रोच एनालिसिस अच्छा, डायरेक्ट टाइप नहीं कर रही, फिर मुझसे होता ही नहीं है। प्राइम, हाँ आवाज नहीं आ रही हो तो इम्पोर्टेंट। आई गेस तुमको इसी ना शॉर्टर लेंथ वाली शॉर्टर लेंथ मिली। इंटरवल लेंथ है, जैसे यहाँ पे सबसे शॉर्टर लेंथ की इंटरवल ये है, और बिगेस्ट लेंथ जो ओवरलैप कर रही है उसको हटा देना चाहिए। लेट मी सी, 1 - 2 1 1 1 and 2 3, ओके। 1 - 2 1 1 1, इसमें कोई है ही नहीं परीक्षक सी में। ओह, ये लॉजिक तो डायरेक्ट बन रहा है पर वाओ, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता है। इनका डिफरेंस अगर मैं स्टोर कर लूँ, जब से लार्जेस्ट डिफरेंस होगा उसको हटा दूँ, उसको काउंट कर लूँ। लाइक इन सब का डिफरेंस 1 है बट इसका 2 है तो ये ओवरलैप करेगी। इसमें सबका डिफरेंस यही 1 सेकेंड।
ये नहीं, कुछ गलत हो रहा है, गलत बोला मैंने। 1,2 5 5। ओके, गलत है ये लॉजिक, फिर से करना पड़ेगा। उनको इसने शॉर्ट लेंथ वाली, शॉर्टर लेंथ वाली क्या इनका डिफरेंस तो कह रहे हो? अम्बिलिकल लेंथ जो ओवरलैप कर रही हो। स्टार्टिंग से लेना स्टार्ट करो स्ट्रिंग को, और जो ओवरलैप करो उनको हटा दो। डिफरेंस के हिसाब से सॉर्ट करना है। स्टार्टिंग से लेना स्टैंडिंग शॉट। ओके, ठीक है, ट्राई करते हैं। एडजेसेंट इंटरवल्स को कंपेयर करके बात करूंगी मैं। 1 2 2 3 3 4 1 3 0 0। So it will always be 0 1. It will be I, mm, 0 0 0 and इनसे डिफरेंस को लिखना है। सिंपली नेस्टेड लूप लाके भी कर सकते हैं क्या वाला? ठीक है। शॉर्ट लेंथ वाली। बट डिफरेंस से कौन देख सकते हो फॉर्म वैल्यूज? ऐसे एक डायरेक्ट फंक्शन होता है। अरे शॉर्ट शॉर्ट से 2D और ये शॉर्ट तो नहीं होती है। मुझे नहीं आता लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है? ओके, मैं कौन सा कर रही हूँ? और lambda function in Java dot array Java lambda function tells you sort how we want to sort the elements. भाई तो 1D array के लिए अच्छा 2D कॉलम सॉर्ट करना है तो अच्छा लैम्डा यानी कि ये वाला एरो यूज हो रहा है तो लैम्डा फंक्शन है। ओके,
Naomi tells you results serve how you want the elements compared. टू डायरे का देखती हूँ मैं मुझे इनके डिफरेंस के हिसाब से सॉर्ट करना है यार ए कॉमा बी वन वाले रो असेंडिंग ऑर्डर में करना हो 132142 ओके ये डिफरेंस वाला कर रहा है Okay. That is not short AI e comma B my gives A1 minus B 1 comma 3 2 comma 1 so short A comma B1 minus B1 okay so let's start next order body data reference sort the rows in ascending order calling the value in front 5281 compare the second value